Welcome everyone. Every one of us go through various life stages, and at every stage, it is extremely important to start planning early. So today, we are going to cover a very important topic about financial planning, and we have Meherzad Dalal from the Strategic Alliance team of Canara Robeco today with us. Meherzad, welcome to Moneyfy Mantra. Thank you so much, Harsh. Thank you so much for giving this opportunity. So just a brief introduction about Meherzad. Meherzad has been associated with Canara Robeco since some years. He has a total, experience of, more than 11 years where he has spent, time across JP Morgan, Deutsche Private Wealth, and HDFC Private Wealth. I think today, we'll be covering more about planning your savings and investments at the start of the year so that you have a comfortable year to meet all your expenses and your future cash flow requirements. Just a quick introduction, about Moneyfy. So we've marked 3-year anniversary of Moneyfy, and every year we have tried to grow our platform with range of new products and features on our platform, to help our customers achieve their goals, their personal finance requirements more smartly. So if you wish to download our Moneyfy app, we've given the link in the description below. Please do check out and explore for your personal finance requirements. So Meherzad, uh, without wasting time, let's start our, questions for today. So, Meherzad, what are some, general investment tips which you want to give, our, viewers today, as we start the new financial year? Thank you so much, Harsh. So the first and foremost thing that we need and any investor should keep in mind is that it's not one thing that generates returns. It's a whole combination of inputs that we've put in, which will help you to generate return. So what we would suggest is that it's always good to have an asset allocation model in place, so that this is the right time to actually plan your asset allocation model, so that in the new financial year you are way ahead of your expenses and you are there to meet your goals. For being in the model, you need to have a few things in place. The first and foremost things that what we need to be is we need to be disciplined in our approach. And while when we say disciplined approach, it's not just that timely putting in money or investing. It's also that there were times that you not need to make investment decisions emotionally. So there are times there are you see a lot of influence actions being taken place that has to be avoided. For asset allocation to be in place, the second most important thing that we need to have is a goal. A goal should not just be qualitative, it should also be quantitative. When we are trying to say, when I'm saying qualitative quantitative, I'm also trying to input that of course you have a goal of I want to travel abroad, I want to have future retirement, I want to have children's education. Apart from this, philanthropy is also a part which is not ever taken into consideration. That also needs to be taken into consideration, which really at times impacts your goal at the later stage. So if it's well kept in place, we really are able to understand how and the thought behind the whole goal. If everything is kept in one basket, and if the basket falls, all the eggs might break. So diversifying your basket is very important. Diversifying through asset classes, say stocks, bonds, real estate, it's actually a very good reward in risk reward ratio basis. Correct. People also look at the historical performances and start putting in money. That is not one needs to look at. There are so many other things that drive a performance in a particular thing. So it's cycle, there are
risks that are involved. So mitigating those risks, doing a thorough research, looking at the opportunity, and then investing is something that we need to plan. And of course, monitoring the asset allocation model continuously is something that we as people should be taking care. And we need to stop timing the market. Even it's really sad to see that even today, after being continuously been hearing these jargons, still people try and time the market, which is really difficult. And it could really have, this could lead to opportunities, and which will not turn out to be in your favor, and your cost is actually higher. So that is something that we need to take care of. मेहरजाद भाई आपने बहुत सही बोला, नो वी शुड नॉट टाइम द मार्केट, True. लेकिन सब इन्वेस्टर्स को अपने रिटर्न्स बढ़ाने हैं। सो अगर ये साल अगर कस्टमर्स को अपने रिटर्न्स बढ़ाने हैं तो क्या क्या पॉइंट्स कस्टमर्स को ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप और टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, अगर मुझे बहुत मतलब एकदम ही ज्यादा रिटर्न्स के लिए अगर एम करना है तो आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज है कि जब पब्लिक बाहर जाती है, जब बोलते हैं कि एक वॉरेन बफेट की सेइंग है, फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। वो एक्चुअली अगर किसी ने टाइम पे ले लिया, मतलब जब पीपल भाग रहे मार्केट से, तभी टाइम है इन्वेस्ट करना। जब हर कोई बंदा जब मार्केट टॉप पे चला जाता है, पीपल स्टार्ट पुटिंग इन मनी, that is not the right thing. We need to get in और staggered way से जाओ। SIP, there are so many modes now available, SIP है, STP है। So if I have थोड़ा सा पैसे मेरे पास अगर ज्यादा आ चुके हैं, लमसम में पैसा है, तो I put the money and have a staggered way of process, that is STP। SIP है, आज हर प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। So these are the places that we should be taking care। और पोर्टफोलियो ऐसे बनना चाहिए कि ये एक शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। पोर्टफोलियो शुड नेवर बी शॉर्ट टर्म, इट हैज टू बी अ गुड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, एंड उससे ही पैसा बनेगा। जो पैसा बनता है वो कंपाउंडिंग से लॉन्ग टर्म पे ही बनता है। करेक्ट। सो हमने अभी पिछले 3 साल में देखा मार्केट एक टाइम पे 40% करेक्ट हुआ था, एंड देन सडनली मार्केट ने ऑलमोस्ट डबल पैसे बनाए। तो आप बोल रहे हो वही लाइंस पे कि वही समय पे बाय करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए जब भी सब लोग आके बेच रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन में बहुत सारे कस्टमर्स कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो अगर आप हमें बता सके कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें कौन से टाइम पे पैसे डेफिनेटली इन्वेस्ट करने चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स हो सकती है हमारे कस्टमर्स से जो अवॉइड करनी चाहिए, एंड विद दिस न्यू फाइनेंशियल ईयर how can we be more smart in our investing approach? तो फर्स्टली हमने सही पकड़े कि देयर आर टाइम्स कि जब पब्लिक को पैसा एक्चुअली डालना है, तब पब्लिक डर के पैसा निकालती है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि पीपल स्टार्ट टॉकिंग कि यार आज से मार्केट तो इट्स नॉट टू मेक मनी, भाई पैसा निकाल दो, पैसा डूब जाएगा। बट अगर हम एसेट एलोकेशन के थ्रू जाएंगे, एसेट एलोकेशन में अपने पास मालूम है हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें अपना गोल मालूम है कि वो लॉन्गर टेन्योर के लिए, फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए या 10 साल के लिए है या 3 साल के लिए है, तो हमें ये जो बाजुओं की जो आवाज है, वो आवाज से हमें डरना नहीं चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट, मतलब जो लेट्स स्टिक टू आवर एसेट एलोकेशन मॉडल। रादर जब कुछ चीजें इम्बैलेंस हो रही है, तो रादर गो टू योर एक्सपर्ट। आज मार्केट में अवेलेबल है, यू हैव टाटा मनीफाई and other such players who are there, Tata Capital is there to help you। तो let's look at rebalancing the portfolio। there would be a time वो बोलेगा सर यही टाइम में थोड़ा और पैसा इंक्लूड करो। अब फॉर एग्जांपल अब नए साल ले लेते हैं। अगर नए साल में आज हर कोई बात कर रहा है फिक्स्ड इनकम फंड्स के बारे में और फिक्स्ड इनकम के क्या हुआ है, रादर यही टाइम है तुम ड्यूरेशन फंड्स पे देख लो, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स पे देख लो, बैंकिंग पीएसयू फंड्स देख लो, लो ड्यूरेशन फंड्स पे देख लो। ये सब में भी तुम्हें सिर्फ एसआईपी चालू करनी चाहिए। अगर आप लोग एसआईपी जब लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में भी एसआईपी चालू करते हो, यू आर एक्चुअली बिल्डिंग अ लिक्विड कॉर्पस फॉर योरसेल्फ। कल उठ के ऐसी जगह हम वो पैसे यूज कर सकते हैं जो हमें ही काम आ सके। दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू टेक केयर।
एंड ऑफ कोर्स हमारे पास एडवाइजर्स है अवेलेबल, हमारे पास एप्स है। तो इसके थ्रू इतना हमें आगे बढ़ना है कि ये जो बाजू की नॉइजेस है उसे हमें एलिमिनेट करनी है। हमें क्राउड में मूव नहीं करना है। वी नीड टू बी स्टिकिंग टू आवर एसेट एलोकेशन, वी नीड टू बी स्टेइंग डिसिप्लिन्ड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। एंड अगर हमने पीरियोडिकली यही चीजें की है तो इन नो वेज इज एन इन्वेस्टर गोइंग टू लूज मनी। इट्स अ विन विन करेक्ट, सिचुएशन फॉर हिम फॉर श्योर। करेक्ट। आपने बहुत सही बात की कि you should also start investing in this fixed income category of mutual funds through an SIP. I think राइट, एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है कि अगर बैंक में पैसा पड़ा है इन्वेस्टर्स के, राइट, वो खर्चा हो जाएगा। अगर ट्रू, आप किसी तरह से, भले ही आप फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल रहे हो, या रिडीम करने के पहले आप पहले तो सोचोगे कि यार मुझे सही में पैसे चाहिए। सो एक जो एक्सपेंस वाली जो सिचुएशन होती है, वो एक तरीके से थोड़ी कम हो जाती है, एंड द कस्टमर्स एट द एंड एंड अप स्पेंडिंग लेस। परफेक्ट है। हर्ष, यू आर परफेक्ट इन सेइंग दिस। अगर हम फॉर एग्जांपल आज फिक्स बैंक पे पैसा रखते हैं, इससे अच्छा मैं कहीं लिक्विड या ओवरनाइट फंड में पैसा रखता हूँ। सबसे पहला तो मुझे रेट तो सेम ही मिल रहा है, प्लस मेरा जो जो अगर बैंक में पैसा होता है तो आजकल क्या होता है, जो जेन जेनजी बोलते हैं, वो लोग को तो कार्ड मिला है तो मतलब स्वाइप करो पैसा अकाउंट में, तो दे वांट टू बाय न्यू थिंग्स एंड स्टफ। यहाँ पे ऑटोमेटिकली योर मनी इज गेटिंग ब्लॉक्ड। योर एक्चुअल लिक्विड कॉर्पस इज बीइंग क्रिएटेड फॉर एन इमरजेंसी और शॉर्ट टर्म। Also, not just that, kal utke yaar, if you want to deploy that money in your asset allocation also in the model that you are making, and you want to increase exposure to certain asset class, that money will help you when actually is the time to put in money. There are times when you yourself want to say कि यार I want to put in money, but बस पैसा ही नहीं है, तो this is the time that will help you. सो महजाद भाई, अगर मुझे देखा जाए तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड इनकम, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अगर किसी तरह से मेरे को एक दोनों के बीच में बैलेंस करना है, आई थिंक फिक्स्ड इनकम साउंड्स मोर फॉर फिक्स्ड रिटर्न्स, not Right, exactly but stable returns, and equities get us higher growth of wealth. but अगर right. किसी तरह से मुझे दोनों के बीच में रिस्क और रिटर्न मैनेज करना है, सो एसेट एलोकेशन मॉडल में मुझे किस तरह से चेंजेस लाने चाहिए सो दैट आई एम एबल टू बैलेंस माय लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। तो द फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टर को उसकी खुद की रिस्क एपेटाइट जाननी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एपेटाइट, ड्यूरेशन उसका कितना बड़ा है, हाउ लॉन्ग डज ही वांट्स टू स्टे इन्वेस्टेड, और उसका गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसका गोल बड़ा है और शॉर्ट टर्म भी है, मतलब 3 से 5 साल, यू वॉन्ट टू पुट हिम मोर, यू वॉन्ट टू एड मनी टू द इक्विटी साइड रादर मोर। But if he has a decent enough goal in the 3 year 5 year bucket, your allocation can be tilted towards fixed income also, because once the money has compounded you want to shift it to fixed income to safeguard the returns that the money is making. And of course जो alpha जो generate हो रहा है equity से, वो तो आप करना चाहोगे, but you would like the money to grow on the fixed income space also. Or of course if the tenure is really long term retirement and stuff, then a decent allocation to the fixed income space is very much required today. People are forgetting कि यार सिर्फ इक्विटी से, मैं सिर्फ अगर इक्विटी में डाल दूंगा, you need to have returns on long term basis if one wants to have them and enjoy the power of compounding. Fixed income and equity as a mix, it goes hand in hand, it has to be there. Only then you will see a good growth in your portfolio. Your portfolio का रिटर्न जो है वो एक एसेट क्लास से नहीं आएगा, वो एसेट एलोकेशन के ही आएगा। करेक्ट। तो मेहरनाथ भाई, हम लोग ने ना बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स देखे हैं पास्ट में। तो इफ यू वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड सम स्ट्रेटजीज जो जिन्होंने बहुत सारे रिटर्न्स कमाए हैं थ्रू दिस capital markets. If you would want to share some of the strategies of some successful investors in the past, if you could give some light over there. ओके, तो जब जब हम बात करते हैं एसेट एलोकेशन की, तो सबसे पहली चीज हो जाती है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर once our investments and securities within each asset class also are diversified,
दिस रिड्यूसेस द रिस्क, मतलब सबसे पहले हमारा रिस्क कम हो गया। एक बार रिस्क कम हो जाता है तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि अब मुझे कहाँ और एलोकेट करना है जब मैं पीरियोडिक रिव्यू कर रहा हूँ। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टैक्टिकल एलोकेशन, statistical allocation. So all these measures are put into place if I have a plan in place. Plan आने के लिए मुझे मेरा horizon, allocation और diversification, अगर ये तीन चार चीजें अगर मेरी लाइन में है और मेरा रिस्क एपेटाइट ऑफ कोर्स आई एम नोन, देन इट बिकम्स वेरी इजी। अ डीआईवाई, इट्स अ डीआईवाई टूल एक्चुअली इफ यू गो टू सी। मतलब मैं खुद से पता कर सकता हूँ कि यार मैं रिस्क एपेटाइट ले सकता हूँ। अगर मुझे ये रिस्क एपेटाइट में मुझे एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मैं सोचता हूँ कि 10 साल में मैं एक यूरोप की टूर कर सकता हूँ। आज यूरोप की टूर फॉर वन पर्सन कुड बी अराउंड एक्स अमाउंट ऑफ मनी। फॉर मेकिंग दैट एक्स अमाउंट ऑफ मनी मैं कितने साल कितना अमाउंट में डाल सकता हूं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। उसी चीज को अगर मैं मिक्स में डालूंगा कि वो कौन से एसेट ग्रुप में जाएगा, तब जाके मेरा द परफेक्ट फिट जो बोलते हैं, ओनली आफ्टर गेटिंग द परफेक्ट फिट आई विल बी एबल टू चैनलाइज एंड गो एंड एंजॉय दैट मनी ऑन कंप्लीशन ऑफ द गोल। करेक्ट। सो मेहरजाद भाई देखो, अभी हम वी आर एट द स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर। राइट। If say I want to start creating calendarized approach for my investments, what are your views? Is there any trend which I can capture by taking certain actions at certain point in time, or you have some Sure. parting views over there? तो एक इस पे थोड़ा सा मैं डिफर होना चाहूंगा। एक ट्रेडिशनल माइंडसेट हुआ करता था पब्लिक का कि जनवरी जब भी आएगा, जनवरी से मार्च में पब्लिक टैक्स सेविंग में पैसा डालेगी। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम पे क्या होता, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट महंगे भी हो जाते हैं एट टाइम्स। सिमिलरली फिक्स्ड इनकम के लिए होता था फेब और मार्च का महीना, पीपल भर भर के पैसे डालते थे फेब और मार्च में। बट आपको क्या यही लगता है कि जो बंदा ये चीज कर रहा है, इज ही नॉट बीइंग बेनिफिटेड? अगर कल उठ के अगर वो बंदे ने अगर पूरे साल में थ्रू आउट द ईयर इन्वेस्ट किया होता, ही वुड बी इन अ बेटर प्लेस। आज अगर हम सोचते हैं कि लास्ट 3 महीने में ही पैसा करना है, इट इज नॉट दैट। ये पूरे साल की एक्टिविटी है। अगर हमने उससे वही सिस्टमैटिकली पूरे साल के थ्रू आउट द ईयर, इफ वी प्लान आवर इन्वेस्टमेंट्स and regularize it and make adjustments, we will not only be able to meet goals easily, effectively, but वो last moment का stress भी नहीं रहेगा। और unfortunately if we realize that an unexpected event happens at that point of time, you are as it is paying a higher premium for that period, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो I would suggest that it is not कि this month we need to do it, but it's a all year activity and everybody needs to plan it at the start, and तो ही जाके तुम्हारा परफेक्ट फिट बैठेगा एंड यू विल नॉट बी जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग विल हैपन ओवर दिस टाइम। तो मेहजाद भाई, आप बोल रहे हो कि कस्टमर्स को अगर ही मतलब टैक्स सेविंग भी करना है या कोई भी गोल के लिए प्लान करना है, rather than looking out for investments in specific time period, एक SIP शुरू कर दो या आपके बास्केट ऑफ फंड्स में, whether it is Perfect. 2 fund 3 fund 4 fund, एंड आप वो SIP कंटिन्यू करो थ्रू आउट द ईयर। सो अगर True. समझो आपको 1.5 लाख का ELSS में आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो आप मे बी 10 या 12 हजार का करीब परफेक्ट स्टार्ट कर दो SIP, एंड इट विल ग्रो थ्रू आउट यस द यस। ईयर एंड आपको मैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिल जाएगा। ये परफेक्ट एग्जांपल आपने दी है। अगर हम स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल अप्रैल महीने से, वी मान लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर में कुछ अनफोर्सीन इवेंट आ जाती है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर ओनली, तो जो हम सोच रहे थे कि जब जनवरी में डालेंगे एंड दैट दिसंबर से वो पीरियड थोड़ा लंबा चल जाता है एंड मार्केट्स फॉर एग्जांपल टेक एंड गो वे बियॉन्ड द थिंग्स स्टार्ट मूविंग अहेड। सो एज एन इन्वेस्टर मैं तो अपना पैसा छोड़ रहा हूँ, आई एम एक्चुअली लूजिंग आउट मनी रादर देन मेकिंग मनी। इससे अच्छा होता कि अगर मैं स्टार्टिंग से प्लान करके कर दिया होता तो मुझे वही चीज दिसंबर में टेंशन नहीं होती। सो देयर वर टू पीपल। सो एग्जांपल अगर हम 2 जन का लेंगे, एक बंदा जो स्टार्टिंग से करता है, एक बंदा एंड में करता है। जो बंदा स्टार्टिंग से करता है ही विल बी मच रिलैक्स्ड
and he has already benefited, उसको already benefit मिल चुकी है starting के points में, entry points से. करेक्ट. सो मेहरजाद भाई, अगर मुझे देखना है कि अगर कोई फैक्टर्स कोई रहेंगे, व्हेन शुड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग, because everyone waits for a particular time to start investing. So what's your message to that kind of customers, and is there any factor one should wait for to start investing? यानी यार सबसे पहली चीज है कि जो बंदा टाइमिंग करता है, आई एम सो श्योर वो बंदे ने पैसे कहीं बनाए नहीं. बहुत ही रेयर केस ऐसा रहेगा जिसने टाइमिंग करके पैसे बनाए. मतलब अगर ऐसी चीज होती या तो इट वाज जस्ट द डाइस ऑफ अ गेम कि मैंने डाइस रोल कर दिया और ये टाइम पे ही मैं पैसा डालूंगा तो मेरा डबल हो जाएगा, तो एवरीबॉडी वुड बी एट द टॉप ऑफ द गेम, विच इज नॉट द केस. रादर अगर हम सच में सही मायने में अगर हम पब्लिक से एक्चुअली जिसने पैसे बनाए हैं ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, इफ वी आस्क पीपल दैट इट इज बीइंग सिस्टमैटिक एंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग हैज हेल्प्ड. No short term, there is no shortcut to it. There is, भाई it is a game which you have to move it that way. After certain time जब वो compounding का effect देगा तभी तुम्हें पैसा मिलेगा और पैसा बनेगा. So timing the market is really wrong. I don't think any investor should be doing it. और बहुत सारे चीजें बोलती भी है कि this is the time, get into this. मतलब वो हर कोई जब बोलना चालू करता है, that is actually not the time and you should be away from it, rather being stay invested in it and let money make money for you. करेक्ट. सो मेहरजाद भाई, अगर मुझे कोई लॉन्ग टर्म गोल है एंड आई हैव मच क्लैरिटी अबाउट इट, इन्वेस्टर्स को यूजुअली होता है कि मेरा ये लॉन्ग टर्म गोल है, राइट. लेकिन इफ आई वांट टू टेक सम शॉर्ट टर्म investment opportunities, and with the help of some short term opportunities move towards the long term goal, वो इन्वेस्टर को वो कैसे अचीव करना चाहिए, whether he should even try this approach or I think short term तो it is very difficult to predict something. बहुत ही ज्यादा difficult है. You rather take a riskier asset class. If your risk appetite, तो तुम्हारी risk appetite ज्यादा है तो तुम riskier asset class ले लो, which will give you higher returns in the frame of period. वो period suitable है. Now of course अब तो it's so much easier that someone knows what is the time frame period, everything is being mentioned, and you have so many you have so many tools to help you. So I don't think that a short term or shortcut lena is the right way. I think systematic approach is the best suited way. That is where a person will actually Meherzad, you can hear me now? Yeah, I can hear you, Harsh. Sorry, I lost you for a while. Yeah, so Meherzad, so coming to the next part of our discussion, I think most of us start of the year we briefly covered our tax planning part, Right. but what are some tax saving instruments that investors can consider in this new financial year? So if we see, there are so many tax saving instruments available now. तो एक तो होता है अपना म्यूचुअल फंड्स का फेवरेट है ELSS. ELSS फंड व्हिच हैज अ 3 year लॉक इन पीरियड. फिर है PPF है, देन वॉलंटरी PF है, NPS है, ULIPs है, FDs है, FDs आई थिंक बाय बैंक्स है. सो दीस आर द मेजर tax saving instruments which are available. From the available lot, according to me, an ELSS fund which has the least lock in period, that's a 3 year lock in period, actually helps you benefiting because it also not only just gives you market linked returns, your money is locked in for 3 years. So first thing is you are able to see it grow for 3 years. And if you think that and market where equity is going to perform, I think ELS is the best suitable fund for that kind of an investor. Correct. So I think from a customer or an investor perspective, as you mentioned, it has a shorter, duration for lock-in. Yeah, shorter lock-in. But should an investor only consider it for 3 years? मतलब अगर मेरा 3 साल खत्म हो जाता है, तो मैं पैसे निकाल दूं कि मतलब is it an
what is advised to the customers in terms of the tenure? Sure. तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट दैट हम जब भी सो व्हेन आई हमने जब एक्चुअली ये टॉपिक स्टार्ट की तो एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन एलोकेशन. अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर फॉर एग्जांपल देयर इज अ न्यू पर्सन कॉलेज ग्रेजुएट है जो कहीं पे प्लेसमेंट हो रहा है और वो उसका सैलरी आने के बाद ही वांट्स टू प्लान इट कि उसका प्लान कैसे होना चाहिए फॉर हिज रिटायरमेंट फॉर हिज ट्रिप फॉर हिज मैरिज एंड स्टफ. सो एवरीथिंग हैज अ टाइम फ्रेम. इफ दिस 3 years इट्स नॉट कि यार ये बंदे को 3 साल में वैसा निकाल देने चाहिए. ईएलएसएस में ईएलएसएस फंड इज एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, so it's going to grow with equity markets, and of course it has a lock, it has a benefit that it just that it has a benefit of tax saving. So ऐसा नहीं है कि कल उठ के 3 साल हो गए तो बंदे को पैसे निकालने ही है. If he is not in need of this money and if he is planned it कि ये पैसे actually उसके retirement के लिए है, he needs to keep that money for his retirement and he'll see that this money when compounded over a good return number, this will make a lot of good returns for his retirement, which after that he can channelize it the way he wants it. करेक्ट. सो मेहरजाद, हमने बहुत बार देखा है इन्वेस्टर्स आके हमें बोलते हैं कि यार मेरे से ये गलती हो गई, मेरे को ऐसा चाहिए था अगले 4 साल में, लेकिन मैंने एक ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जहां पे मैं अभी 15 साल 20 साल पैसे नहीं निकाल सकता. Right. So this is one of the mistakes. I think this is the topmost mistake. So अगर कोई इन्वेस्टर है जो टैक्स सेविंग करना चाहता है, आपके हिसाब से क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए उसको? बिकॉज आई थिंक डिसीजंस लेना या फिर कौन से डिसीजंस को अवॉइड करना, Right. ये भी एक तरीका है टू नॉट मेक एक्सीडेंट्स. Of सो course. आपके हिसाब से व्हाट आर दीज कॉमन मिस्टेक्स दैट एन इन्वेस्टर मेक्स व्हाइल सेविंग टैक्सेस? तो सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि सबसे पहले बहुत जन रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे. तो सबसे पहले तो प्लीज एवरीबडी नीड्स टू स्टार्ट फाइलिंग रिटर्न्स. वो बहुत बड़ी चीज है. नाउ तो एवरीवन हैज टू डू इट. फिर होता है कि यार जो कुछ लोग करके आ रहे मतलब जो मेरे नेबर कर रहा है मैं वही कर लेता हूँ. बट थोड़ा सा हम अपना अगर यूज कर ले लेट्स स्टार्ट यूजिंग द अवेलेबल टूल्स दैट वी हैव. There are so many tax saving instruments, ppf, elss, nps and stuff that is actually there. In the frame of that, look at something. So according to me, let's plan it. It's of course views are personal. Let's plan it in such a way that in the shortest period of time I don't want to grow my money for locked in. I don't want my money to be locked in for say 10-15 years. I rather look at a period where my money is locked in for a lesser number of time plus giving me better returns at the same, rather more better returns, because it's not that it's not giving me fixed returns, but it's giving market link returns. And one needs to understand that market link returns over a longer term period will always make more money than fixed returns. Correct. So Meherzad bhai, when I speak with some of the customers, customers want to save taxes and also manage their investment goals. So कोई तरीका है to manage both of them together? So yes, there is a very good way if we take this route of ELSS. Firstly you have identified your tax saving option, that is the ELSS scheme. You put in your goal in place ki, supposing I say that with the help of my ELSS funds, after 10 years say I will have my I'll sponsor my child's higher education. So actually that money which has grown in ELSS will actually help me to not only sponsor him but also take care of him to a certain extent. तो अगर मेरा एक बार गोल सेट हुआ है, मेरा ELSS फंड चूज हो चुका है, एंड फॉर अ लॉन्गर टाइम होराइजन, since equity mutual funds will give me better returns as compared to other asset classes which are there in the tax saving instruments. So I think Meherzad bhai, we've covered I think large part of what customers or investors should look forward in this new financial year. Right. Meherzad bhai, only if I want to summarize this in the top 3 points that the customer should have in its checklist start of the year, what Sure. would you recommend to such customers?
Sure. The first thing is, please asset allocation pe jao. It's not that one asset class is going to make money. It's a mixture. The first is asset allocation. Second thing that one should really be, please stay focused and in line with your investment goal. Don't try के मतलब भाई जहाँ पब्लिक जा रही है वहां में चले जाऊं. Let's not deviate from our asset allocation model. So that's the second part. And third thing is, stay invested, be there, be in the journey, and let the journey be joyful, so that the money that you're making, you'll be enjoying when your money is made. When your investments turn out to be really good, that is when you're actually wanting and you're proud of them. So be in that journey, stay there, be in that process. There is no shortcut to it. Yes, it will take some time, but when it grows, it will grow really leaps and bounds. Thanks, Meherzad. So yeah, with this we come towards the end of our session today. Meherzad, thank you for your time. To answer all our queries patiently. Wow, Uh, Harsh, thank you so much. to all our viewers, if you are planning to start your investment journey, अगर आपको investments, SIP, mutual fund में invest करना है, do check out our Moneyfy app. You can download the Moneyfy app on Android and iOS. We also have a Moneyfy website wherein you can go to tatacapitalmoneyfy.com. I think if you are looking for the right mutual fund to choose from, I think Moneyfy will give you an excellent view of selecting your best mutual fund. Further, you can also now start consolidating all your investments in Moneyfy. अगर आपके पास investments आपके कोई दोस्त के पास है, investments अगर आपने कोई एजेंट से किया है, अगर आपने कोई और प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट किया है, अगर आप एएमसी से डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको अगर सब फंड्स का व्यू एक साथ में अगर देखना है, आप मनीफाई पे आके अपना डिटेल्स डाल के सब एक साथ में आप कंसोलिडेट करके आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट दे सकते हो. Further, do follow us on Facebook and YouTube, to keep viewing such more interesting videos. Thanks everyone. Thanks, Meherzad. Thanks, Harsh. Thanks, Moneyfy team, and thanks, Tata Capital. Thank you. Thank you.